गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। लेवल इज मीडियम, इसको हम इजी कर देंगे। ये प्रॉब्लम ऑफ द डे कंपटीशन 60 डे चैलेंज है जो एनपीसीआई ने पावर किया ऑन जीएफजी। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है जो नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं है उस एरे में, और उसको इस तरीके से कॉन्कैट करना है जिससे उसका जो कॉम्बिनेशन हो वो लार्जेस्ट नंबर रहे, और जो रिटर्न करना आउटपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग ही आउटपुट है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। इनपुट एरे में 5 एलिमेंट्स दिया गया, 3, 30, 34, 5 एंड 9। इसको इसने आउटपुट में 9534330 यूज किया। तो एक्सप्लेनेशन के उसमें देखें तो अरेंजमेंट 95343 34, 3 एंड 10 30 gives the largest value। अगर इसको कोई दूसरे वे पे अगर अरेंज करने की कोशिश करे तो वो चीज नहीं होने वाला। सो इसको अगर और बेटर वे में समझे, एक एरे दिया हुआ है, ओके, जिसमें 2, देन 5 एंड 7। हम सिंगल डिजिट का लेते हैं, यूज कर रहे हैं अभी। जब ये सिंगल डिजिट का, इसके कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 2, 5, 7। देन सेकेंड कॉम्बिनेशन 5, 2, 7। थर्ड कॉम्बिनेशन 7, 2, 5। सो हमको समझ में आ गया 725 इज द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे इसको कॉमा कर देते हैं जिससे क्लैरिटी रहे। 725 लार्जेस्ट नंबर का, बट यहाँ पे एक और चीज करें तो एक और नंबर बन जाएगा 752। तो हमको समझ में आ गया 752 हमारा आउटपुट होना चाहिए। इन सिमिलर मैनर हमको भी यहाँ पे सेम चीज ही करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एरे 54, 546, 548, देन 60। इसको अरेंज किया गया है कैसे? यहाँ पे देखो 60, 548, 548, 546 एंड 54। सो इसका हम लोग पहले स्टेप्स समझते हैं। स्टेप्स कैसे हो सकते हैं? इसके लिए स्टेप्स हम लोग इजीली समझते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा कि एरे को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। एरे ऑफ इंटीजर जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग एरे। ओके, देन सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसको कस्टम कंपैरेटर यूज करते हैं। कस्टम कंपैरेटर कंपैरेटर यूज करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग कस्टम कंपैरेटर। ऑन थर्ड स्टेज हमको कोई दो नंबर लेना है, समझ लो दो नंबर लेना है, लाइक ए एंड बी। ए एंड बी को हम लोग को एक बार ए प्लस बी करना है, देन बी प्लस ए। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अगर ये वाला चीज हुआ, ए प्लस बी हुआ, यहाँ पे ए प्लस बी हुआ, देन हमको क्या क्लैरिटी आ गया कि ए प्लस बी लार्जर हुआ, इट्स लार्जर। ओके, इट्स लार्जर। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि बी सॉरी ए इज लार्जर देन बी। हमको यही समझ में आया। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम लोग इसकी बात करें, बी प्लस ए की बात करें, अगर ये लार्जर हो गया तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? बी इज लार्जर देन ए। एक क्लैरिटी आ गई।
ये थोड़ा समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर है 3 एंड 30, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं a प्लस बी, कंसिडर 3 एज अ a एंड 30 एज अ b। सो a प्लस बी करेंगे तो हमको आंसर कितना आएगा? आंसर कैसा आएगा? स्ट्रिंग है ना, 30 प्लस 3 इज नॉट 33, ऐड नहीं करना वैसे, ये हम लोग इसको स्ट्रिंग में चेंज कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा गलत लिखा गया, ये स्ट्रिंग है। अगर a प्लस b करते तो 330 आता है। दैट implies that 3 is larger than 30. Okay, in similar manner, if it is coming 303, this implies 30 is larger than 3. So in both of the cases, if we see, okay, in both of the cases, if we see which become the largest, we can easily see this is the largest. 303 is the, oh sorry, not 303, it's the 330 is largest, so this is, okay, this became the our whole point. Now in similar case, we are putting an edge cases, means the worst condition. For the worst condition, I am going that if the highest number is 0, then what is going to happen? Always return 0. Now how can you understand why the highest number I am considering 0 and returning 0? Because the array is consisting of 0 comma 0. Maybe this is the possibility case. So now let's start the code. From here we are writing the code. First we have to know the length of the array. For that, int n, okay, and you find the length. Then on the next line, after knowing the length, I have to convert into the string, assigning a string array first, and then inputting the string array via uh, for loop. And I to 0, then greater than n is the length of the array, and then I plus plus the increment operator. Now string of I is equals to string dot value of array of I. This statement completely stored the array of I into the string of I. So now the conversion is completed, that these integers are converted into strings. Now for sorting, as I have earlier told, we are going to use the custom comparator. For that, this arrays dot sort. Sort is a function
is a function available in which we are using the string. Why are you string used? Because our array string array name is str. So we are using str. Then a comma b. I'm considering that you are well aware of the comparable and the lambda function. So it is like that. Then after this, the comparator function is going on. This will compare b plus a. That is, I have earlier told you. I can just show you comparator function. So this is a comparator we are using, that b plus a and a plus b is got compared and stored into a comma b. Now, next line, I am going to use the edge function that I have earlier talked about, the worst case that it can be 0. So how can we consider? So for that, I am considering string of 0 dot equals 0. After this, return. Now the worst case I have talked about. Now the next. What is the, now we are using the string builder, so that with the use of the string builder we can append every result on it. So for that, string builder SB. I am considering it's as a name as SB, or you can prefer any other name. Now using the for each loop, that's a new loop we are, you are well aware about that. It is fast. Using the append function for it, so that it append the s function s. We have recently declared string as s. Now closing it. After everything, I am going to return sb dot to string. Why I am going to write this, I will tell you. I will explain each line to you now, as I have earlier explained, but okay, it's no problem. First, int array dot length. Wait, int array dot length is used to store the size of the input array, which is declared uh, by default by the GFG. On the second hand, I am using this line to create a new string array. With these line, with these line, I am converting all the integer value into string data type and assigning to string of I. After that, I'm using compare to function, that is a custom comparator by the use of the lambda function, in which b plus a and a plus b are going to are going to uh, compare each other and store in a comma b, and this string is stored here. Okay, by the sort function it automatically stored. In the worst condition, if there is a worst condition related to this, then it returns 0 if all the elements in the array contain 0 as an element. Then by the use of the string builder here, it's basically creating a object string builder, that is sp, to efficiently हम फाइनल स्ट्रिंग को बिल्ड कर पा रहे हैं. सो टू एसबी में हम लोग सारे स्ट्रिंग्स को बिल्ड करके उसमें डाल दे रहे हैं, एंड फिर उसमें जो अपेंड फंक्शन है उससे क्या हो रहा है, लूप चला रहे हैं. लूप चलने की वजह से हम हर स्ट्रिंग को एसबी में इनपुट कर रहे हैं एंड फाइनल लार्ज नंबर को हम जनरेट कर ले रहे हैं. और रिटर्न टू एसबी डॉट स्ट्रिंग फंक्शन से हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं. जैसे हमको पता है एसबी एज अ स्ट्रिंग बिल्डर, हमने उसका ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन किया, बट टू स्ट्रिंग्स हम स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड फाइनल आउटपुट हम लोग जनरेट कर ले रहे हैं. तो एक बार रन करके देखते हैं. मैंने इसको पहले ही रन कर लिया, इसलिए ओके, सम एरर इज देयर ऑन 8th of May. Okay, value of O is capital here.
ओके यार, ऐसे फोन स्मॉल में चला गया था। या टेस्ट केसेस प्रोसेस होना शुरू हो गया और हमारा टेस्ट केसेस पास हो गया है। 1111 टेस्ट केसेस थे, वो कम्प्लीटली पास। पहले एक्यूरेसी 50% एंड टाइम टेकन 1 मिनट 23। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो 20 फेब 2026 क्वेश्चन था। प्रॉब्लम ऑफ द डे, इट इज सॉल्व। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे मैं हर रोज ऐसे वीडियोस पोस्ट कर सकूं और आपका कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो सके। थैंक यू गाइस।